या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, औलिया नूरी मस्जिद जिंदाबाद, हुजूर आफ्ताब मिल्लत जिंदाबाद, शमशीर रजा। अल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औफ़े आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे क़ादिरियम नाराए या औफ़े आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां ज़िंदाबाद। मसलक सरकार आला आला हज़रत ज़िंदाबाद। या इलाही मसलक अहमद रज़ा खां ज़िंदाबाद। हिफ्ज़ नामों से रिसालत का जो ज़िम्मेदार है सैयदी या मुर्शदी शाह मुस्तफ़ा खां ज़िंदाबाद। हामिल फ़ैज़ रज़ाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon Aaqi Namdar Madani Tajdar Hazrat Ahmad Mujtaba Muhammadan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. His blessings and salutations upon the Anbiya Kiram, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Kiram, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, Aimma Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam for blessing us with the opportunity to congregate for Salatul JUMMAH and to prostrate in the most exalted court. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Today marks the Yawm-e Siddique Akbar. आज के दिन जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुबारक यौम है। It is the blessed day of Siddique Akbar radiallahu anhu when he journeyed from this world into the hereafter. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddique radiallahu anhu, Sahabi Rasul, the most beloved companion of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam, जिनके बारे में आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आतीक़ुम मिनन नार है, that this is that personality जो जहन्नम की आग से आज़ाद है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में एक मरतबा once Hazrat Abu Bakr Siddique came in the darbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Nabi Akram Noori Mujassam sallallahu alaihi wasallam said, whoever wants to see somebody who is free from Jahannam, who is a Jannati, look at the face of Abu Bakr. Abu Bakr के चेहरे को देखो। आप सोचो ये वो अबू बकर है। This is that Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, that when the people made hijrat from Makkatul Mukarramah to Madinatul Munawwarah, जब सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम मक्का से मदीना शरीफ हिजरत फरमा गए, तो एक एक दो दो लोग वहाँ से हिजरत करते थे। They used to make hijrat from Makkatul Mukarramah to Madinatul Munawwarah, and it was in that time because the kuffar Makkah gave a lot of taklif to the Muslims. मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ दी कुफ़ार मक्का ने, कुरैश मक्का ने। तो वो वहाँ से हिजरत करके मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ गए। दे मेड हिजरत फ्रॉम मक्का एंड वेंट टू मदीना मुनव्वरा। बट द रियलिटी, हकीकत ये है
कि the hijrat was on the command of Almighty Allah. Because ये कहते हैं, it is said that the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was taken out of Makkah by the people of Makkah. This is just for understanding the zulm that they did. मगर है कोई जो रसूल पाक को कहीं से निकाल दे? Is there anybody that can take Nabi sallallahu alaihi wasallam out from anywhere? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए. Everything is for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In reality, this was for the benefit of the Sahaba Ikram also, and it was for the spread of Islam. But everybody, when they went from Makkah to Medina, they went with their friends, they went with their family, whoever they went with. मगर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ, खुदा ने हुक्म दिया, when Allah commanded Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make hijrat, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he left from Makkah to Madinatul Munawwara, Huzur sallallahu alaihi wasallam chose Abu Bakr Siddique. From everybody, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam chose Abu Bakr Siddique radiyallahu ta'ala an. And we know, हमें इल्म है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरीके से कुछ नहीं करते थे. The beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam never used to do anything on his own accord. जो भी करते थे वही इलाही होता था. Whatever Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam did was wahi hai ilahi. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took Sayyidina Abu Bakr with him and he went to Medina from Makkah, then this was the command of Almighty Allah, that from all your Sahaba take Abu Bakr with you. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an's love, his muhabbat for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislo be misal hai. It is a unique love. It is a unique love. Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu an's heart, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His soul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His life, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His leaving this dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उनका जीना, उनका दुनिया से तशरीफ ले जाना, ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में. This was the life of Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an. It shows us a very great lesson. इससे बहुत एक खास सबक हासिल होता है कि दुनिया में कहीं जाए, कहीं सफ़र करे, कहीं काम करे, हमेशा अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ के करे. अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ के काम करे तो बरकतें हासिल होगी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु was attached to Rasulullah all the time attached. और ये attachment इतना मजबूत हो गया, ये attachment जो है ये इतना मजबूत हो गया कि बचपने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, youth with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Islam with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Nabi sallallahu alaihi wasallam commanded and gave the ailan of Islam, then the first adult male, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया. He is the first one that accepted the message of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, first amongst the adult males to accept the ailan nubuwat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anh इस्लाम के लिए सबसे पहले तैयार हुए अपने जान माल सब कुर्बान करने के लिए. He was always prepared. He was always attached to Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, whether it was in Badr or it was in Uhud, no matter where it was, वो Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam के साये बन के रहे हैं. He remained in the shade and as the spiritual shadow of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. और subhanallah, जब कब्र में गए Hazrat Abu Bakr Siddiq, when he went into his grave also, even today he is resting in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इससे क्या सबक मिलती है? What lesson do we get from this? The lesson, the sabak that we get from this is that if you truly love somebody, what did Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam say? When the Sahaba Ikram asked Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam about certain things, I'm being brief, ये रिवायत आप बार बार सुन चुके हैं. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said that your hashar will be with the one whom you love. आखिरत में जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तुम उसी के साथ रहोगे. अब सोचो ज़रा. इसी बात पे मैं इख्तिताम कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, 20 पे मुझे ख़त्म करना है.
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told the companions, हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, आप जिससे मोहब्बत करोगे आखिरत में तुम उसी के साथ रहोगे. Whoever you love, you will be with them in the hereafter. अब आप सोचो, अब आप सोचिए, एक सवाल करता हूँ, let me ask a question. Today it is sad, अफसोस का मकाम है, Muslims dress like the kuffar, behave like them, walk like them, talk like them, even some of them want to eat and drink with their left hand like them, everything like them. So why do you imitate somebody? Because you care for them, you love them, you have feelings for them. So if we are going to behave like them, कल मैदान महशर में हमारा हशर किसके साथ होगा? Whose company we will be with? Think about it. If you keep company of evil people, on the day of Qiyamah you will be risen with evil people. Hazrat Abu Bakr Siddique radiallahu anhu kept the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Huzur ne farmaya sallallahu alaihi wasallam, when the sur will be blown, sur jab phuki jayegi, and when all the people will wake up from their graves by Allah's hukum for Qayamat, then Huzur ne farmaya that I will be the first to wake up. I will be the first to rise from my Rawza Mubarak. And when I rise and I come out, on my right will be the hand of Abu Bakr in my right hand, and in my left hand will be the hand of Umar radiallahu ta'ala. Dekho, wo the farmaya that whoever loves the one whom you love, you will rise with that person. Your hashar will be with them. Abu Bakr loves Rasul Pak so much that when Huzur wakes from his Rawza Anwar, then the first person to wake and give his hand in the hand of Rasulullah will be Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala. Think about it. सोचने की बात है. उसी से दलील हो गई पूरी दुनिया के लिए कि हुजूर ने फरमा दिया. हुजूर said, I will rise at first and then with me will be Abu Bakr and Umar. और फिर उसके बाद जन्नतुल बकी के अहले इस्लाम वहाँ से उठेंगे. Then all the other people. इसका मतलब क्या हुआ? Have we not understood? We are being told that if you want to be with the beloveds, then walk in the footsteps of Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Walk in the footsteps of Umar al-Faruq. Walk in the footsteps of Uthman al-Nurayn. Walk in the footsteps of Ali al-Murtada radiallahu anhu. Because if you walk in their footsteps, उनके नक्शे कदम पे चलोगे, तो दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, कब्र में भी तुम कामयाब रहोगे, हशर में भी तुम कामयाब रहोगे. You will be happy and successful here, you will be successful in your grave, you will be successful in the hereafter. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu gave the greatest lesson. If you want to sit, if you needed to sit, in inverted commas, समझाने के लिए, in the biggest university in the world, and if you wanted to learn from the most well-trained professor, then sit in the class of Abu Bakr. Sit in the university of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and learn from him, because nobody understood Rasulullah sallallahu alaihi wasallam better than Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. If you follow that, उस तरीके पे चलोगे, तो तुम्हारा डिग्री यहाँ भी फायदा करेगा और तुम्हारा डिग्री आखिरत में भी फायदा करेगा. Everybody wants a degree, doctor, lawyer, professor, this, that. Abu Bakr's degree was the best. Ashiq Mustafa sallallahu alaihi wasallam. All of the Sahaba were, but that level of Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, that even the Sahaba used to want to be like Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Why? Because he taught by example. He led by example. वे लोगों की मिसाल बन के रहे. Today we don't follow the example. हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को अपना लीडर बनाए, उन लोगों को अपना एग्जाम्पल बनाए जिसको इस्तिंजा करने का ढंग नहीं आता, उनको हम अपना लीडर बनाते हैं, उनको हम अपना क्या बोलते हैं आइडियल. वी वांट टू मेक देम आवर आइडियल, वी वांट टू मेक देम आवर हीरोज. उनको आप आइडियल बना रहे जो हमारे बच्चों को फिलिस्तीन में ज़बह कर रहे हैं. वी वांट टू मेक दोज पीपल आवर एग्जाम्पल्स who are killing our children in Palestine. Almost 9,000 children killed, made shaheed in so few days. कभी आपने हिस्ट्री में देखा? तब भी मुसलमान को होश नहीं आ रहा है. तब भी हम उन्हीं के तरीके पे चलना चाह रहे हैं.
We still want to follow their way. Think about it. Qiyamah ke din kya jawab doge? What are we going to answer on the day of Qiyamah? We don't want to read our salah on time. We don't want to do what is good. People want to spend their time in Western life. But I want to ask a question to myself and to you. After we die and go into our qabr, which Western life is going to help us? What is going to help us? Allah's beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. The mercy of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam will be in our qabr to assist us. You don't know about Munkar and Nakir. शायद आपको याद नहीं है कि मुनकर और नकीर जब कब्र में आएंगे सवाल करने के लिए तो कैसे आएंगे? ज़मीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे. When Munkar and Nakir come, they will tear your zameen of your the zameen in your qabr. The biggest earthquake in the world is nothing. Zalzala. जब मुनकर नकीर अपने दांतों से ज़मीन को फाड़ के आएंगे, समझ रहे? तो उस वक्त आदमी का होश उड़ जाएगा. लोग कहते हैं मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है. वो तो सिर्फ मौत का मजा चक्का है. अगर मुर्दा होता तो जवाब कैसा देता? मुर्दा होता तो जवाब कैसा देता? इससे सबक हासिल हो गया कि हमारा मरना ये थोड़े देर के लिए, उसके बाद कब्र में फिर एक ज़िंदगी होती है, हशर में ज़िंदगी होती है. मगर उसको सजाने के लिए, टू ब्यूटिफाई दैट, टू अडॉर्न दैट, टू बी सक्सेसफुल देयर, व्हाट डू यू हैव टू डू? सिंपल टर्म. Anybody who wants a good investment, he needs a good banker. सिंपल बात बता के ख़त्म करता हूँ. किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है अपने पैसे के फाइनेंशियल, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, you always invest it with the best investment financier. Somebody who can protect your investments, not somebody who will finish your money. Jaiz investment. Okay? Why? You want some return. If you want to invest for your akhirat and get the return there, तो सहाबा इकराम के दामन को थाम लो, औलिया अल्लाह के दामन को थाम लो. When you invest your time, you invest your love for them, then in the akhirat you will see the love of Allah and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. And if you don't do that, यहाँ भी परेशान होगे, वहाँ भी परेशान होगे. अल्लाह ताला ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए. हमें जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल सेहत आजिल अता फरमा. जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा. जितने बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा. जो परेशान हाल है उनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमा. ख़ास बिलखुसूस फ़िलिस्तीन की मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए, उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए और उनको हिम्मत और बहादुरी अता फरमाए और उनके बाजुओं को क़ुव्वत हैदरी से मजबूत फरमा दे. अल्लाह ताला नूरी मस्जिद को हमेशा आबाद रखे और तमाम जो नूरी मस्जिद में खिदमत कर रहे अल्लाह उन सब की खिदमत को कबूल फरमा. हमारे बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.